Okay, now we have to find angle OAB. They are saying if it is a parallelogram, ये find करना है हम लोग को. We know that if it is a parallelogram, opposite angles are equal. Angle OAB will be equal to OCB. These two angles will be equal, right? And angle A will be equal to angle B. Angle A और B दोनों equal हो जाएंगे अगर if it is a parallelogram. Okay, so we'll write. I'll write here. If quadrilateral OABC is a parallelogram, angle COA is equal to angle OAB. I think so. Sorry, COA is equal to CBA. Equal to A degree. A ले लो नहीं तो B ले लो चलेगा, कोई भी एक ले लो. And angle OAB is equal to angle OCB. Okay, we don't know the measurement. Opposite angles of parallelogram therefore angle OAB plus angle OAB will be equal to OCA or OCOA equal to 180 degree. Reason adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Adjacent angles of ये लिखने का जरूरत नहीं है. We don't want this. Supplementary है. Therefore angle OAB plus COA कितना है? A है, 180 हो जाएगा. Therefore angle OAB is equal to 180 minus A. इसका वैल्यू आएगा 180 minus A. समझा? अभी A का वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा. A will be equal to B, right? तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 3A equal to 180 degree, therefore A equal to 60 degree. A का वैल्यू 60 आया. So therefore angle OAB is equal to 180 minus 60 कितना हो जाएगा? 120 degree. क्लियर है एवरीवन? ये कितना मिला मेरे को? 120 डिग्री. ये भी 120 डिग्री. और ये कितना मिलेगा मुझे? A 60 डिग्री. सर आपको ये 60 डिग्री कैसे मिला? अरे सॉरी, मैंने 180 ले लिया. इट इज 360 ना, एक मिस्टेक है. 360 है वो. हाँ, मैंने 180 ले लिया. 180 ये हो जाएगा 120 डिग्री. A का वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री और A का वैल्यू 120 हो गया तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 6. ये हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है. देखने से भी लग रहा हो. ठीक है, क्लियर नाउ? क्रिश, एवरीवन? Yes. Now 26th one.
two chords AB and CD intersect at P inside the circle. Okay. Figure is not given, so we'll draw it. There is a circle and there are two chords. They are intersecting at P. Prove that the sum of the angles subtended by the arc AC and BD at the center are equal to twice the angle APC. APC. Okay, central. Suppose O is the center here, okay? इसका center इधर है O. हम लोग को ये प्रूव करने बोला है कि जो आर्क AC और CB से जो CD ना, आर्क AC और CD, ओके, ये डिफरेंट कलर यूज करता हूँ. ये तो एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है ना, sum of the central angle. Prove that the sum of the angles subtended by arc AC and BD at the center O is equal to twice of angle APC. APC का डबल है ये, APC का डबल होना चाहिए, ये दोनों एंगल का एडिशन. APC is not a angle at the circumference, not even an angle at the center. Remember that. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनी आइडिया क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कम ऑन, टेल मी. हम्म अच्छा, यू हैव द सेम क्वेश्चन क्या 26 में? प्लीज लेट मी नो. हाँ, बिकॉज माय दिस बुक वाज ओल्ड. यू हैव द सेम क्वेश्चन क्या? Checking. हाँ हाँ, अभी तो ओपन भी नहीं किया है बुक्स. You have na question? Yes, I was not opening the book. I have the question, but this book is old ना. I have what book I have is that is very old. But mostly match करता ही है most of the sums. But then too, some sums they don't match. So that's why before solving it, I was asking. 26 sum na. Hmm.
In the figure given alongside AB parallel to CD and O is the center of the circle if ADC is 25 degree. Figure is given. Yeah, figure is given and your figure is 25 ये था क्या? 25 ये था. 25 नहीं 25 भी अलग है. और ये 17. 17 भी अलग है. और ये 16. 16 सेम है. बाकी सब सेम है ना, फिर 15 भी सेम रहेगा फिर तो. 15 भी सेम है. हाँ, कुछ कुछ सम डिफरेंट है, मैंने बोला ना. 14. 14 भी सेम है. ओके. 13. सेम है. ओके, दैट मीन्स ये मेरा इधर से रॉन्ग है ना. 17 से लेके. ओके, 17 से लेके 17 25 से लेके ना. हाँ. क्रिश, मेरे को एक काम करना ना, 17 से लेके एक एक सम का अगर अच्छे से फोटो निकाल के भेजोगे तो दैट विल बी बेटर. भेजता हूँ. ओके, बाद में भेज दो. विल एंड टुडे राइट नाउ हियर. ये कर लिया तो भी ठीक है. मैं आई विल ऐड दिस, आई विल कीप दिस 17 and 25 because already I have solved it and you understood this. So I will keep as 17 old and 17 new and 25 old and 25 new. 26 I will change it. You know now which sums I need. I have written at the starting of the topic. You have the portion sheet, na? हाँ. Send me those sums only. Like 17 send me. Don't send me 18 to 24. Then send me 25, 26. Don't send me 27, 28. Then 29. Then don't send me 30, 31 चाहिए. Right? This all मेरे को चाहिए. जो इसमें numbers है वो नहीं चाहिए मुझे. They are not included. हाँ. ठीक है. Rest all I need. So can you keep that trigonometry test on Sunday? Okay, एक दिन और सही. या बेस्ट थर्सडे कर दो ऑफलाइन. ऑफलाइन विल डिस्कस. ठीक है. Sir, can you send this PDF? Yeah, I'll send it. Yes, sir. Bye, sir. Thank you. Bye bye. बाय सर. थैंक यू सर. Bye bye.